So hello everyone. This is me Sanjeevani Parashar. So have a wonderful good afternoon to you, ma'am. So hello guys. This is me Sanjeevani Parashar, and today we have with us a very wonderful and respectful teacher of PD Convent School. So first of all, I would like to say thanks, ma'am, to give me this wonderful opportunity, and it's my pleasure to sit with in front of you. So as we all know that you are a very hard worker, smart thinker, and a very ambitious person. So ma'am, my first question is to you that who suggested you that teaching sector is best for you, and who is the inspiration of you for your work? Nobody suggested me that teaching is the best place for the ladies, but as I know कि destiny gave me this chance to be a teacher, कि suddenly or by chance I entered into them and into this and when I entered in this field, I felt so much pleasure, so much glad, so much happiness, because we meet a lot of colors of our life. There are so many students of different personalities, different nature, different behavior, and this attracted me and I choose it. इसीलिए बस कि वो बच्चे बहुत अच्छे लगते थे, प्यारे प्यारे अलग अलग तरह के, एंड दे गिव सो मच अफेक्शन टू अस कि समझ नहीं आता कि इनको छोड़ा कैसे जाए. Okay, ma'am. So, ma'am, as we all know that you have taught all types of students. So, my question is that how do you handle those students who are not taking serious of their careers and who are not taking serious of their studies? It is an art to motivate them towards their study. देखिए, study is a very essential part of our life. Without study, we can be a man, but we can't be a civilized man. क्योंकि बिना शिक्षा के civilized होना जो है वो आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है, because life is very high tech, and students who are being misguided and who don't take interest in the study, so in a playway method we turn them towards this, because they playing is such kind of things कि everyone likes this. तो अगर उनको जो है फोर्सफुली हम पनिश करके डांट कर या इस तरह से पढ़ाने की कोशिश करते हैं ना, वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते. लेकिन अगर बच्चों के साथ बच्चा बन जाओ तो वो बराबर से इंटरेस्ट लेते हैं. Okay, ma'am. So, ma'am, as we know that work is the first priority for everyone's life. Like, priority of teacher is teaching, priority of student is studying. So, when did you realize that your work is your priority, and how? Since starting, as a student, not as a teacher, I was every time responsible towards my work. I always justified with that. As a girl, as a daughter, I always paid my responsibilities. As a student, I always paid my responsibilities. I was always loved by my every teacher. मेरी सारी टीचर मुझे बहुत प्यार करती थी, क्योंकि मैं शुरू से रिस्पॉन्सिबल थी अपनी स्टडी में भी, और उसके बाद एज अ टीचर वहाँ पर भी मैंने कभी इनजस्टिफाई नहीं किया अपने स्टूडेंट्स के साथ. आई वॉज ऑलवेज ऑनेस्ट विद माई वर्क. हमेशा अपने काम के साथ ईमानदारी की. एंड इट इज़ मस्ट, इफ़ वी वॉन्ट टू गेट सक्सेस इन एनी फील्ड, इट इज़ मस्ट टू बी ऑनेस्ट. Okay, ma'am, as we know nowadays success is a very important part for everyone's life. Everyone has to become successful. So ma'am, if you got a chance to give any key of success to all our young youths, so which key would you like to give? Listen more, speak less. क्योंकि सबसे पहले तो as I noticed among the students, they listen very less and speak too much. तो it means कि you are giving more and taking very less. जब लोगे बहुत कम, दोगे बहुत ज़्यादा, तो तुम्हारे पास बचेगा क्या? और सुनने से क्या होता है कि बट I do not say कि listen abuses, listen unnecessary things. So listen motivations, listen your seniors, listen your teachers, listen your parents. Why I do so? I say so because they are more experienced.
कि स्टडी से ही एक्सपीरियंस नहीं आता, ज़िंदगी से बहुत तजुर्बा आता है, वक्त से बहुत तजुर्बा आता है, और जो उनके पास है ना वो अभी हमारे पास नहीं है, और जिसको लेने में हमें बहुत टाइम लगेगा. दैट्स वाई वी शुड लिसन मोर. हमें बड़ों से सुनना चाहिए, उनकी बातें समझनी चाहिए, और जो चीज़ हमें किताबें भी नहीं सिखा पाती कभी कभी वो चीज़ें वो सिखा देते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन मोर, स्पीक लेस एंड कलेक्ट विथ यू. अपने साथ उस चीज़ को स्टोर करके रखो एंड यूटिलाइज इट. एंड एज आई सेड, हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस ऑलवेज, एंड नेवर गिव अप इफ़ यू फेल इन समथिंग. कभी भी गिव अप मत करो, छोड़ो मत अगर किसी चीज़ में सक्सेस नहीं मिलती है. एज वी कैन सी, एज द रिजल्ट इज़ डिक्लेयर्ड, देयर आर सो मैनी नेगेटिव थाट्स कम इनटू द स्टूडेंट्स कि कोई सुसाइड कर लेता है, कोई भाग जाता है. नो, नेवर गिव अप. लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी प्रीशियस. तो कुछ चीज़ें हैं जैसे फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, कि अगर हम गिरेंगे नहीं, हम उठना कैसे सीखेंगे. तो उठने के लिए गिरना बहुत ज़रूरी है. सफलता पाने के लिए असफल होना ज़रूरी है, और जिसने असफलता का मज़ा नहीं लिया वो सफलता का तो कभी ले ही नहीं सकता. और इसका एग्जाम्पल वी कैन सी द लाइव एग्जाम्पल इन आवर पॉलिटिक्स, इन आवर पार्टीज़, कि एक ऐसी पार्टी जिसकी रूट सालों से थी वो उखड़ गई. क्यों? क्योंकि उसका जो लीडर है उसने असफलता का कभी मज़ा नहीं चखा, और आज जो रूल कर रहे हैं वो असफल होकर, वो गिर गिर कर ही उठे हैं और आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं. सो नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, डू योर बेस्ट, एंड आगे गॉड की मर्जी. So, ma'am, my next question is based on teamwork. So, what do you think? Is it good to work in a team or alone? Both are necessary, but when you are in a team, it is must. It is very important. क्योंकि मैंने पहले कहा आपके पिछले क्वेश्चन में कि एक्सपीरियंस, एंड व्हेन वी डू आवर वर्क इन अ टीम, देयर आर सो मेनी माइंड्स. कई सारे दिमाग एक साथ मिलकर काम करते हैं. सो थॉट्स इंटरचेंज होते हैं, एक्सपीरियंस इंटरचेंज होता है, और साथ ही साथ जो है एक कोलैबोरेशन, अ फीलिंग ऑफ टीम वर्क, कंपैशन फॉर ईच अदर. तो ये सारी चीज़ें हैं ना, वो अकेले रहकर नहीं आ सकती. अकेले रहकर आप पढ़ सकते हो, आप एक्सपीरियंस ले सकते हो, बट यू कांट शेयर. और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, टीम वर्क जो है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट गिव्स यू प्लेजर, क्योंकि अकेला जना भाड़ नहीं फोड़ सकता. So, ma'am, as we know that you are associated with Bharat Vikas Parishad, so I know very well that there are so many works and responsibilities in them. So, how do you handle these responsibilities and works? इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू वर्क इन भारत विकास परिषद, क्योंकि ये एक इट इज़ अ सोशल वर्क एसोसिएशन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अ कंट्री. देयर आर सो मैनी काइंड्स ऑफ वर्क, लाइक ब्लड डोनेशन है, हेल्पिंग द पुअर पर्सन है, एंड वेयर एवर वी गॉट द चांस टू हैव द नीडी पर्सन्स वी ऑलवेज डू. एंड देयर आर सो मैनी मेम्बर्स, एंड एवरीबडी इज़ गिवन a chance to work for the others, and I also got so many times, and as it is a part of teamwork, है ना. तो उस टीम वर्क में करने में एक अलग ही मज़ा आता है. और ड्यूरिंग द कोरोना टाइम वी ऑल्सो डू दी वर्चुअल मीटिंग्स, वर्चुअल गेम्स, वर्चुअल एक्टिविटीज़ एंड कॉम्पिटिशन्स ऑल्सो. सो वैसे भी कि इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, और किसी के लिए भी कोई अच्छा काम करो, वी ऑलवेज फील प्लेजर. Okay, ma'am. As you know, ma'am, from starting, I am from MP board. So, ma'am, you please tell me that what is the difference between an MP board and CBSE board, which is too difficult? This is a very interesting question. I always have in my mind कि there's a big difference in MP board and CBSE board. And I would not like to say something negative, but कहीं ना कहीं मेरे मन में एक बात ये रहती है कि there's a big difference between these two boards. CBSE board works on the quality, on the क्या कहना चाहिए कि जो बच्चों के अंदर का on the talents. It wants to take out the talent of the individuals outside, but it is not in MP board. MP board क्या है? It is a spoon feeding.
कि बच्चों को बस उतना ही करा दिया, उतना ही रटा दिया और उतना ही सिलेबस में आ गया, तो दे डू नॉट गेट प्रिपेयर फॉर टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ में जो चैलेंज आते हैं ना, वो प्री रिटन नहीं होते हैं कि पहले से हमें लिखा है, हम उसके लिए प्रिपेयर हैं और हम गए और हमने उसे फेस कर लिया. चैलेंजेस आर ऑलवेज अनएक्सपेक्टेड एंड CBSE does so. This is the change in MP board and CBSE board. Okay, ma'am. So, ma'am, what is success according to you? How to become a successful person? To become a successful person is to be a good person, first of all, to be a good human being, to be a good person in place you act. As if you are a son, then to be a good son, and if you are a student, so respect your teachers. It is the first and foremost duty of yours. And if you are a teacher or any worker, any employee in any sector, so do a favor, be honest with your work. अगर आप ऑनेस्ट हैं अपने काम के प्रति, अपने पद के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, इट इज़ इम्पॉसिबल टू बी सक्सेसफुल. Okay, ma'am. So, ma'am, do you remember how many years have you passed in the teaching sector? Yes, of course. 25 years. Since 25 years, I am in teaching sector, directly or indirectly. Sometimes I taught in a school, sometime at my home, in my coaching classes, and at present, I am working in Abhyas Coaching Institute at Fulbagh. So, ma'am, now my last question is, how was your experience of teaching life? It is very interesting. Not to earn money, I did so. Because it gives an internal pleasure to me to teach the students. They are a color of a rainbow. बिल्कुल अलग अलग रंगों के बच्चे होते हैं, अलग अलग नेचर के, and when they please, when they give honor, respect to us, and when they listen very carefully to us. कि सबसे बड़ी बात क्या होती है कि whenever parents say something to them, they never accept that and they do not agree with that. But when a teacher says, दे ऑलवेज ट्रस्ट दैम ब्लाइंडली. कि एक छोटे बच्चे से कहा जाए कि बेटा ऐसे करना, सही चीज़ बता रहे कि नहीं नहीं मेरी मम्मा ने तो यही बताया और यही सही है. सो व्हाट इज़ दिस? तो इट इज़ अ वेरी 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 मच रिस्पॉन्सिबल टास्क, आई वुड लाइक टू से. सो एवरी टीचर शुड बी ऑनेस्ट. टीचर वो होता है कि मैं टीचर हूँ इसलिए नहीं कह रही, लेकिन टीचर का जो अगर रिप्लेस किया जाए तो इट इज़ जस्ट लाइक गॉड, कि भगवान के बराबर होता है. जैसे भगवान हमें जिस शेप में ढालकर भेजता है, जैसे हम बदल नहीं सकते. वी कांट चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ अस, वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्फ, बट वी कांट चेंज आवर आइज, वी कांट चेंज आवर नोज, वी कांट चेंज आवर हाइट एट्सेट्रा. इन द सेम वे कि एक टीचर जैसा फॉर्म दे देता है ना एक स्टूडेंट को, वो कभी नहीं बदलता. उसे इम्प्रूव किया जा सकता है पर उसे चेंज नहीं किया जा सकता. तो एक टीचर को हमेशा ऑनेस्ट होना चाहिए अपने स्टूडेंट के लिए, बिकॉज ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर हिज और हर 2 or 3 or more children. He is the responsible citizen of the country. He is responsible for the structure of of a country, and he is responsible for the future of a country. So, ma'am, have a big thanks to you for giving me your precious time. And thank you too.